हेलो एवरीवन, आज हमारे पास है BMW की X5 M स्पोर्ट वर्जन है, वाइट कलर की गाड़ी है। इसे हम सैटिन ब्लैक में रैप करने वाले हैं। साथ ही साथ इसके व्हील्स ग्लॉस ब्लैक में पेंट करने वाले हैं, बैजेस को डीक्रोम करने वाले हैं और इस पर M स्ट्राइप्स भी रैप से डिजाइन करने वाले हैं। तो चलिए डिसमैंटलिंग के प्रोसेस से शुरू करते हैं। सबसे पहले हैंडल्स खोलने के लिए हमने डोर पैनल्स खोले। M क्लैडिंग रिवेट्स पे बैठी हुई थी तो हमें रिवेट्स खोलने पड़े। फ्रंट बम्पर और ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से खोला। हेडलाइट टेललाइट दोनों खोलने के बाद रियर बम्पर खोला गया। तो चलो अब काम की बात पे आते हैं। तो जैसा कि आप सबने अभी तक देखा, हमने इस गाड़ी को सैटिन ब्लैक में रैप किया है। सैटिन ब्लैक ग्लॉस और मैट ब्लैक के बीच का शेड होता है, सेमी ग्लॉसी होता है। मैट ब्लैक से थोड़ा ज़्यादा डार्क होता है। आजकल ज़्यादातर लोग सैटिन का शेड प्रेफर कर रहे हैं मैट के कंपैरिजन में, क्योंकि जहाँ पर मैट ब्लैक थोड़ा ग्रेइश लुक देता है, सैटिन ब्लैक डीप ब्लैक लुक देता है।
इस गाड़ी पर हमने एक स्पेशल एम स्ट्राइप पैटर्न भी डिजाइन किया है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वो आपको कैसा लगा। वीडियो के सारे डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर ऑसम कंटेंट। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत मजेदार लगा होगा। मैं हूँ आपका होस्ट परीक्षित। वी थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड अब चलिए गाड़ी के फाइनल शॉट्स देखते हैं।